Good morning. Welcome to hindiIsEasy. Today we are going to see the line by line explanation for the lesson Nadan Dost, lesson 3, class 6, NCERT Hindi Patya Pustak, Vasanth Bhag 1. Nadan Dost, innocent friend. Here we are going to read about the kids who are trying to take care of the bird's egg. Unfortunately, because of their ignorance, they are not able to protect the egg, but instead they destroy the egg. So destruction of eggs happens because of the ignorance or the knowledge which is lacking in the kids. What we have to learn from this lesson is anything done ignorantly is not good. We have to understand, get the knowledge before the things which we are trying to do. The kids took all the measures to protect the bird's egg, but this resulted in destruction of the eggs. So man should not interfere in the lives of animals. This we have to understand. The animals should be allowed to live their life freely. Taking these two as a learning outcome from this lesson, we will move forward, and this wonderful story is written by Munshi Premchand. If you get time, you can go and read Munshi Premchand stories, which will be very interesting. So let's see a quick author introduction. He is Munshi Premchand, who was born on 31st July 1880 in Varanasi and died on 8th October 1936 in Varanasi. So the real name of Munshi Premchand is Dhanpat Rai Srivastav. The pen name is Munshi Premchand. Very famous for his Hindustani literature. Earlier, before Premchand, Munshi Premchand, the pen name was Nabab Rai. But because the British people have banned this name, he started to use Premchand. Along with Munshi, he was doing the work. So the both names used to come together, Munshi and Premchand, and in long days it becomes Munshi Premchand. So his notable works are Mansarovar, Shatranj Ke Khiladi, Gaban, Eidgah, Mansarovar, Karambhumi. He published his first collection of 5 short stories in 1907 called Sorrow of the Nations. So there are many short stories and novels which he has written. If you find time, you can go and read those stories. So this is Munshi Premchand Memorial Gate, which is there in Varanasi. If you are visiting Varanasi, don't miss to see Munshi Premchand's Memorial Gate. So Munshi Premchand's ancestors were from a large group called Chitravanshi Kayasri family who owned acres of land. Father Ajbab Lal was a post office clerk. So his mother is Anandi Devi. Dhanpat Rai was the 4th son. The first 2 kids have died, and the earliest, the elder sister, whose name is Sugi. And when Dhanpat Rai was 8 to 9 years, her elder sister got married. And so his uncle Mahabir K is a rich landlord, has kept Munshi Premchand's name to be a Nawab. And in the pen name of Nawab Rai only he used to write the writings earlier. So at the age of 8, his mother died because of his long illness. And afterwards, the grandmother took care of Munshi Premchand, also died. And he was felt isolated because his sister also got married, and he used to feel so all alone. Munshi Premchand's writings will be in the simple language. He doesn't use much of Sanskrit words, and he will be telling the stories very interestingly, and his novels will also depict the problems or the situations that is faced by the peasants, the common people. அவங்களோட கஷ்டத்தை பற்றி தான் அதில் கொடுத்துருப்பார் அவர். So that was a quick introduction about the author Premchand. Now we'll read and understand the lesson. नादान दोस्त. केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए. कार्निஸ் இப்போ விண்டோ இப்படி இருக்குன்னா விண்டோக்கு மேலே ஒரு சன்ஷேட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ தட் த வாட்டர்லாம் ட்ரிப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை தான் கார்னிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. த சன்ஷேட் விச் இஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் த विंडो. केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते. So Keshav and Shama used to observe the birds which comes and goes in Karnis. Karnis கிட்ட வந்துட்டு இருக்க பேர்ட்ஸை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. So this is चिड़िया is a singular form. Okay. सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते. So morning எழுந்திரிச்சோடனே கண்ணை சிமிட்டிட்டு
आंखें मलते मीन्स रबिंग द आइज, दे विल कम एंड स्टैंड नियर द कार्निस. और चिड़ा चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते, एंड दे विल बी वॉचिंग द birds. The cheetah is the male bird, चिड़िया is the female bird. அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பார்ப்பாங்க. उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता. What fun they'll be getting watching the birds, we don't know. दूध और जिलेबी की सूद भी ना रहती. So दूध and जिलेबी சாப்பிடணும், அந்த டேஸ்ட் கூட they will not have the remembrance to have the दूध and jalebi. In the morning north side if you see, they'll have the jalebi and milk as a breakfast. So அது சாப்பிடணும் கூட உங்களுக்கு தோணாது. दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, एंड फॉर द बोथ माइंड्स विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. अंडे कितने बड़े होंगे, हाउ बिग द एग्स विल बी, किस रंग के होंगे, विच कलर इट वुड बी, कितने होंगे, हाउ मच एग्स विल बी, क्या खाते होंगे, व्हाट दे विल बी ईटिंग, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, हाउ द यंग वंस विल कम आउट ऑफ द एग, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, हाउ द विंग्स विल कम फॉर द बर्ड्स, घोंसला कैसा होगा, हाउ द नेस्ट विल बी. लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं. सो द आंसर கொடுக்கறதுக்கு யாருமே கிடையாது. देयर इज नो वन टू आंसर देम. ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, घर के काम धंधों ना हाउस वर्क, फुर्सत ना, शी इज बिजी डूइंग द हाउस वर्क. ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, एंड द फादर वाज आल्सो बिजी इन राइटिंग एंड रीडिंग. सो द बोथ वर बिजी एंड दे डोंट हैव एनीवन टू गिव द आंसर्स फॉर देयर क्वेश्चंस. दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे. सो द बोथ विल आस्क द क्वेश्चन एंड समवन विल बी सेइंग द आंसर अमंग देम, and they will make themselves satisfied. तसल्ली ना, they will make themselves satisfied. Okay, this should be the answer for the question. அப்படின்றது அவங்களே பேசி they will come to a conclusion. This is the carnies, okay, where the bird have come, where the male bird and female bird comes and sits, and they have given the eggs also. The kids will be watching these birds, and the kannu simtikte rubbing their eyes. The early morning they'll come and watch this, and they don't even remember the doodh and jalebi, and they will keep on watching the birds. Kids will have lot of questions within them. How big the egg will be, what is the color, how the nest will be, how many eggs will be there, how the birds will come out of the egg, what they will be eating. For all these questions they don't have the answers, because mother is very busy in the housework and father is also busy in the writing and reading work. So they will question themselves, they'll answer themselves, and they will find something for the questions, and they will make themselves comfortable by giving the answers and questions among themselves itself. So they will ask the questions and they will say the answer which they know, and they will make themselves comfortable. तसल्ली दे दिया करते मीन्स they solace themselves. श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे? So Shama will be asking, what brother? The kids as soon as they come out of the egg they will flew away. फुर उड़ जाएंगे, स्पीड अप परंदु पोइडुमा. केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, एज ए साइंटिस्ट विल बी टेलिंग प्राउडली, नहीं रे पगली मीन्स नो मैट लाइक दैट, செல்லமாக நம்ம கூப்பிடுற அட பைத்தியமே அப்படிலாம் இல்லை. पहले पर निकलेंगे, फर्स्ट द विंग्स हैज़ टू कम आउट. बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, विदाउट द विंग्स हाउ दे विल फ्लाई. श्यामा इज आस्किंग, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, द पुअर बर्ड व्हाट इट विल बी फीडिंग द यंग वंस नाउ. केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका. दिस कष्टமான क्वेश्चन, पेचीदा सवाल इज द हार्ड क्वेश्चन. नाउ ही डजंट नो व्हाट टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इस तरह 3-4 दिन गुजर गए. लाइक दिस द 2-3 days हैज गॉन अवे. दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी. सो एवरी डे द क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा इस क्यूरियोसिटी इज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एवरी डे. अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे. To see the eggs also they were now very curious. They have lost the patience. Adir na, to get impatient आइटांगे. Their curiosity is increasing that they want to see the eggs now. उन्होंने अनुमान लगाया. So they guessed it. अनुमान ना guess பண்ணிக்கிட்டாங்க कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे. So by now the eggs, the young ones would have come out. बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ. बच्चों के चारे मीन्स द बेबी फूड. இப்போ young ones வந்திருக்கும், what the bird will be feeding them, what will be the baby food for the young ones, like that the question has come into their mind. There is many questions which Shyama is asking, and with very proud feel the Keshav is giving his reply with this knowledge. And when she asks what will be the food for the young ones, now he doesn't know what to answer. चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे. So where the bird will find out so many grains to fill the stomach of all the young ones.
गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे. The poor kids, बच्चे is the young ones of the bird. எல்லா poor kids will die within hungry. ஸோ மர் ஜாயங்கே மீன்ஸ் சூச்சு சொல்லி செத்து போயிடுவாங்க. பிகாஸ் த அவ்வளோ கிரெயின்ஸ் எப்படி பேர்ட் எடுத்துகிட்டு வரும். லைக் தட் த क्वेश्चन comes into the mind of the kids. इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे. இந்த மாதிரி ஒன்று கெஸ் பண்ணிட்டாங்க. திஸ் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் பேர்ட், வாட் த பேர்ட் வில் டூ இஃப் சச் ப்ராப்ளம் கம்ஸ். They don't know whether it will happen or not, but they were talking and they were guessing what if the birds doesn't find the baby food for the young ones. So எல்லாம் செத்து போயிடுமே, like that they were thinking and they both got afraid. In the guess பண்ணிட்டு दोनों घबरा उठे means they became so afraid. दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पे थोड़ा सा दाना रख दिया जाए. So they both decided, फैसला means decided that they'll grains கொஞ்சம் வெச்சிடலாம் कार्निसல. So they'll keep some grains in the कार्निस. श्यामा खुश होकर बोली. So she was very happy. तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना. So now the birds doesn't have to go and search of the food if we keep the grains in the कार्निस. केशव नहीं, तब क्यों जाएगी. नो, वाई इट हैज़ टू गो व्हेन द ग्रेन्स इज नेक्स्ट टू देम. श्यामा क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी. नाउ द यंग वंस विल नॉट हैव द सनलाइट. அது கார்னிஸ்க்கு மேலே இருக்கல சன்ரைஸ் படும் இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு சன்ரைஸ் படும்ல, வெயில் படும்ல. ஷீ இஸ் ஆஸ்கிங் ஹர் பிரதர். 3 days when they were watching the bird, so many questions have come into their mind and they are giving the answers within themselves. So the discussion has come like what they will do for the grains, how the mother bird will manage giving food for all the young ones. So shall we keep food grain, shall we keep water, how to do the shelter for them. All those discussion is happening when the two kids are talking to each other in these 2, 3, 4 days. केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था. So now earlier the Shyama has asked, right, the sunlight will fall on the kids. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கேஷவ் இதை பற்றி யோசிக்கல. he didn't think about this problem. பெயின் பற்றி யோசிக்கல. तकलीफ is the pain. இந்த பெயினை பற்றி he didn't realize. बोला ज़रूर तकलीफ हो रही होगी. so some problem would be there if the sun rays are coming and hitting the birds directly. बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे. so तड़पते मीन्स earning, அந்த கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க due to thirst. प्यासना thirst. water இல்லாமல் they will also feel the pain, right. ऊपर छाया भी तो कोई नहीं. सो மேலே ஷேடு கூட இல்லைல்ல, छाया. the shade is also not there, water is also not there. so the kids will be having the problem and they will be having difficulty because of the thirst. आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए. so finally what was decided among the kids were like they will make a छत, அந்த terrace மாதிரி பண்ணிக்கலாம், roof மாதிரி போட்டுக்கலாம் using the cloth. पानी की प्याली, so we'll keep a bowl of water. थोड़े से चावल रख देंगे and we'll keep rice also. so this was the request they have raised. okay, proposal. so थोड़े के चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ. प्रस्ताव is the proposal they talked among themselves. okay, we'll make the cloth or a shade கொடுத்துடலாம், we'll keep water bowl, we have a grains கொஞ்சம் பவுலில் வச்சிடலாம். all these proposals has been approved. ஸ்வீकृत हुआ means they were approved by the both kids. accepted by the both kids. okay, स्वीकृत is accepted or approved by the both kids. दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे. वे बड़े चाव से वेरी इंटरेस्टिंगली द बोथ किड्स स्टार्टेड टू डू द वर्क. श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई. ஸோ அம்மாவுக்கு தெரியாமல் ஃப்ரம் த பாட் ஷீ காட் சம் கிரெயின்ஸ், ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. ஆங்க் பச்சாக்கர் மீன்ஸ் வித்தவுட் நோயிங்லி, அம்மாவுக்கு தெரியாமல். கீப்பிங் அவே ஃப்ரம் அதர்ஸ் ஐசைட் ஷி ஹஸ் brought the grains. केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा. पत्थर की प्याली इज़ द बाउल मेड अप ऑफ स्टोन. அதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருப்பாங்க. they would have kept the tail. அதை எடுத்துகிட்டு போய் கீழே he has poured that oil into the ground and he cleaned that bowl and he has kept water for the bird. अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए. चांदनी इज़ नॉट मून लाइट. இட் மீன்ஸ் த ஷேடுக்காக இப்போ எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றது क्लॉथ. ஸோ ஷேடோ பண்ணுறதுக்காக हाउ फ्रॉम वेयर दे हैव टू ब्रिंग द क्लॉथ. फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और चड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे. ஸோ த क्वेश्चन कम्स विदाउट द स्टिक हाउ द क्लॉथ கேன் பி கெப்ட். இப்போ ஒரு சன்ஷேட் இப்படி இருக்குன்னா, இப்போ இந்த பேர்டோட நெஸ்ட்டுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டிக்ஸ் இல்லாமல் and the cloth has to be put for the shading, right. so how this can happen without the sticks, where we can go and get the
cloth shadow பண்ணுறதுக்கு எப்படி cloth எடுத்து tent மாதிரி பண்ணோன்னா எப்படி இது stick இல்லாமல் நிற்கும். All these questions are arising in the kids mind. Rihanna sticks. Okay. केशव बड़ी देर तक इसी उदयपुर में रहा. The how to solve this puzzle and योचनेले இருந்தா how to do this without sticks, how can they make the shade. आखिरकार so finally उसने ये मुश्किल भी हल कर दी and he have found the solution for this. श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ. Go and get the basket which you used to throw the waste things. अम्मा जी को मत दिखाना. Don't show to mother. श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है. It has been torn inside. நடுவில் கிழிஞ்சிருக்கு, உடஞ்சிருக்கு, கிழிஞ்சிருக்கு. उसमें से धूप न जाएगी. So அது வழியா உள்ள போகாதா, வெயில் உள்ள போகாதா, like that she is asking the question. केशव ने झुंझलाकर कहा. So झुंझलाकर means annoyingly he replied. तू टोकरी तोला नी बास्केट எடுத்துட்டு வா. मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा. सुराख வந்து அந்த ஹோலை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு I'll make some idea. அந்த wisdom யூஸ் பண்ணி I'll do some idea how to close the basket. You just go and bring the basket. Don't tell to mother. Like that he is giving the instruction to his sister. And he is pouring the oil from the stone bowl to fill the water, and Shama is also getting the grains. So they have bought grains and the water for the bird. Now he is telling to bring the tokri. Tokriல நடுவுல கிழிஞ்சிருக்கு, இது வழியா sunlight போகாதா, like that she is asking the question. He is telling I'll make some idea, you just go and bring the basket without telling mother. अम्मा दौड़कर टोकरी उठा लाई and she runningly she went and bought the टोकरी. केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया. Now அந்த ஹோல் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து he has kept the paper. कागज ठूस दिया means in the hole he has kept the paper. He has cramped the paper. तब टोकरी को एक टहनी में टिकाकर बोला. Now he kept the टोकरी in one stick and told, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा. So like that only I'll keep near the घोंसला and make the shade. आड़ कर दूंगा means I'll keep make it shade. तब कैसे धूप जाएगी? Now the sunlight will not get into. Like that he is showing the way how he is planned to keep the shade for the nest. श्यामा ने दिल में सोचा. Now श्यामा was thinking, भैया कितने चालाक हैं, how clever my brother is. So टिक्का करना स्टेडिया वच्चिट्टु I'll keep like this so that the sunlight will not get into the nest. She bought the basket टोकरी and is keeping the paper in the between, and like this with the help of a stick he is telling I'll keep like this so that sunlight will not get into the nest. This is a scene 2. गर्मी के दिन थे. It was a summer time. बापूजी दफ्तर गए हुए. बापूजी दफ्तर means father has gone to office. दफ्तर is office. अम्मा जी दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी. So mother has made the both kids to sleep and she also slept along with them. लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? But how there was no sleep in the eyes of the kids. अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे. So to convince the mother, they both acted as if they closed the eyes like they are also sleeping. So they were waiting for the opportunity. So if mother sleeps, they can go out and do all these things for the bird. जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गए. So as soon as they know that mother has slept, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए. So they slowly got up and opened the latch. Sitkani is the latch. நம்ம லாக் போடுவோம் இல்லையா, அந்த latch ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी. हिफाजत is protection. So now they started to do the work to protect the eggs. केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया. So from the room, कमरा ना रूम, from the room he got one stool. लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी. So when he cannot reach the carnies with the stool, he bought the bath stool. பாத் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டூல் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ஸ்டூலை வச்சேன். he kept the stool on top of the bath stool to reach the carnies. स्टूल के नीचे रखा और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा and with the fear he was climbing the stool. So this is the bath stool and on that they have kept the stool and he got into the stool to reach the carnies. श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी. So श्यामा was holding the stool using the both hands. स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था ज़रा सा हिल जाता. तो स्टूलोட நாலு காலுமே not in the same plane. So எந்த இடத்துல ஜாஸ்தி pressure, where the pressure is more,
there the stool will shake, हिल जाता मीन्स அது शेक आग आरம்பிச்சிடும். उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, उसी का दिल जानता है how much of fear he has to face when the stool is shaking. His heart only will know. दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता. सो ही वॉज होल्डिंग द कार्निस इन बोथ हैंड्स एंड श्यामा को दबी आवाज में डांटता. विद द मफ्ड वॉइस ही यूज्ड टू स्कोल्ड हिज सिस्टर. अच्छी तरह पकड़ करेक्टा पुड़ी है लाइक दैट ही वॉज टेलिंग. He both hands he used to hold the carnice, and with the fear only the boy was doing the things for the eggs. Due to the pressure, whenever the stool shakes, he used to shout at his sister to hold the stool properly. Because of the summer, mother made them to sleep and she also slept, but the kids did not get the sleep and they were seeing when mother will sleep. அப்புறம் அவங்க எழுந்திரிச்சு வந்துட்டு they silently went out and சிட்டுக்கனி they opened the latch of the door and they tried to reach the carnice. Using the stool they reached the carnice to see the eggs. Whenever the stool used to shake, the boy used to shout in the muffled voice, hold the stool properly, otherwise I'll get down and beat you. वरना उतर कर बहुत मारूंगा. I'll come down and beat you. So hold the stool properly. मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, but she was also so curious to see the carnice. மேலே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். So when she was not holding the stool properly, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता है and her concentration was going to the carnice and हाथ ढीले पड़ जाते and the loose up उड़ी का आरம்பிச்சிட்டா. She used to hold the stool very loosely. केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई. As soon as he kept the hand on the carnice, the birds flew away. केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे and he could see that in the carnice there were few straws were there. तिनके ना the vacuoles बोलना dry grass. और उन पर 3 अंडे थे and there was 3 eggs on it. जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था. The घोंसला with the nest which he used to see in the trees, those type of घोंसला was not there on the carnice. श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? So from the down, श्यामा asked, how many kids are there, brother? केशव, 3 अंडे हैं, 3 eggs are there. अभी बच्चे नहीं निकले. The kids have not come out. श्यामा, ज़रा हमें देखने दो भैया. Please allow me to see also. कितने बड़े हैं? How big are they? केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिट्टड़ी ले आ. So I'll show you. Go and get the चिट्टड़ी. चिट्टड़ी is torn out clothes. So கிழிஞ்சு போன துணியெல்லாம் எடுத்துட்டு வா. बेचारे अंडे तिनके पे पड़े. The eggs are on the straws. So he is watching the eggs which is on the straws. श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई. So she ran into the house and bought some clothes from the old dhoti. Vestin sulvo in Tamil. So she got the cloth from the old dhoti. केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया and bendingly he got the cloth from श्यामा's hand. उसकी कई तह करके उसने गद्दी बनाई. कहीं तह ना लेयर. So layer मारी मडिचिட்டு he made some layers out of the cloth and made like a गद्दी cushion मारी पनीटर. उसे तिनकों पर बिछा कर and he kept on the straw. तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए and kept the eggs on top of that cloth. Stop the video here as a part 1 video of the explanation and the rest of the lesson I continue in the next video. If you have any doubt or clarification, put in the comment section and surely reply back. Thank you, students.